Good morning everybody. Welcome to my channel Technimath. I am Kitish sir. Today हम रीड करेंगे मेट्रिक मेजर के बारे में. ओके पहले देखते हैं व्हाट इज मेट्रिक मेजर्स. देखो metric system was invented in France. It is invented in France. Okay, a long time ago. Metric system we use 10 just like our decimal system. In metric system, we'll read about length. Okay, then volume and mass, weight. मास और वेट. ओके पहले डिस्कस करेंगे लेंथ के बारे में. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज स्टैंडर्ड यूनिट मीटर. स्टैंडर्ड यूनिट मीटर. स्टैंडर्ड यूनिट मीटर. ओके मीटर इज मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. तो we can measure we have to measure 10 millimeter. 10 smallest unit is what? Millimeter. 10 millimeter equal to 1 centimeter. 1 centimeter. Okay, 10 millimeter equal to 1 centimeter, like this. So 1 cm or centimeter equal to 10 cm equal to 1 decimeter or dm. Okay, then 10 dm equal to 1 meter, then 10 meter equal to 1 dam, decameter, then 10 dam equal to 1 hm, hectometer, 10 hm equal to 1 kilometer. Okay, we have to remember it. In here, before going to say you how to remember it, we have to learn. In here, in Greek language, we have some number. I am writing some number. 10 उसको बोलते हैं डेका. 10 मतलब डेका. Okay, in symbol we will call DA. Okay, it is our number. It is their symbol and it is Greek name. It is their Latin name or Greek name. Okay, so 100 बोलते हेक्टो. 100 बोलते हेक्टो. सिंबल इज एच. देन 1000 बोलते किलो. उसका सिंबल है के. सिमिलरली 1/10 वी कॉल इट डेसी. 1/10 सिंपली डी. 1/100 बोलते सेंटी. वी राइट सी. 1/1000 इक्वल टू मिली. उसके सिंबल बोलते हैं एन. ओके अभी हमने देख लिया 10 को इन ग्रीक लैंग्वेज डी ए. इन सिंबल वी कॉल इट डी ए. 100 एच, 1000 के, 1/10 डी, 100 सी सेंटी, 1000 एम मिली. ओके इस तरह उसे हम याद करेंगे. ओके देखो अभी देखो हमने लिख दिया. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. स्टैंडर्ड यूनिट मीटर. स्टैंडर्ड यूनिट मीटर. सो एवरीवेयर आई एम राइटिंग 10. सो DAM. DA मीन्स 10. एक्चुअली 10 मीटर. किससे? DA का मतलब होता है DA मीन्स 10. DA मीन्स 10
and m I am writing here. DAM 10 meter. Similarly, HM, H means 100, so 100 meter. KM, K means 1000, so 1000 meter. Similarly, DM, D means 1 by 10, D means 1 by 10 meter. Like this. CM, C means 1 by 100 meters. Like this. MM, M means 1 by 1000 meter. Okay. Or reverse we can write 1 meter equal to 1000 mm. 1000 mm. 1 meter equal to 100 cm. 1 meter equal to 10 dm. Okay. So these are the unit. But how can you remember it? For that, go with my technique. I am already coding it with a sentence, simple sentence. Know how dancing monkey develop class math. In here, first letter K, H. Okay, first letter K, H, DA, M standard unit length. This side also 3, D, C, M. Okay. Now, in all number, standard unit is length. So mm add do. Km, HM, DAM. Then M is our standard unit, meter. Then DM, then CM, then mm. Okay. अभी देखो, each are multiple of 10. Each are multiple from this side go. From this side will go into 10 do means you will get into 10 into 10. All are multiple of 10. All are multiple of 10. Okay. देखो कैसे होता है 10 mm इक्वल टू mm के पीछे cm है, राइटिंग 1 cm. देन मल्टीपल ऑफ 10 cm इक्वल टू 1 dm. 10 dm इक्वल टू 1 m dm m. देन 10 m इक्वल टू 1 dam m dam हैविंग. देन 10 dam equal to 1 hm hectometer. Then 10 hm equal to 1 km. So these are the tables. These are the metric table for length. Okay. It is measure of length. It is what? Measure of length. Measure of length. Okay. How can you remember? Look at here. 10 mm equal to 1 cm. 10 cm equal to 1 dm. 10 dm equal to 1 meter. 10 meter equal to 1 dm. 10 dm equal to 1 hm. 10 hm equal to 1 km. So I am writing here and it become your table. Next. Conversion. Suppose somebody asking you 5 meter equal to dash cm. Suppose we are on meter tab. From here we have to go to centimeter. So how many jump will make? 1 jump, 2 jump. From meter to centimeter we need 2 jump. 2 jump we need. So I am writing 5, 2 0 are writing. 2 0 I am writing. Okay. Similarly, other number 18 DAM
इक्वल टू डेक्स mm। dm टू mm जाने के लिए हमें कितना जंप मारेंगे? 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप एंड 4 जंप। सो आफ्टर 18 4 0 राइट। ओके, 4 जंप 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। So we are writing 4 0। So like this 5 kilometer equal to dex dam decameter। km look, dm look, how many jump you have to make? 1 jump, 2 jump, so 500 tm। so हम किसी भी तरह करते हैं, देखो 35 dm equal to dex mm, dmc mmc, how many jump you have to? 1 2 jump, so after 35 put 2 0। लाइक दिस हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से कन्वर्सन करते हैं। देखो कुछ नंबर को हम कन्वर्सन करते हैं, जैसे एग्जाम में आता है 9 मीटर 35 सेंटीमीटर इक्वल टू कन्वर्ट इनटू cm, कन्वर्ट इनटू cm, कन्वर्ट इनटू cm, cm में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सो 9 इंटू 100 प्लस 35 cm और 900 प्लस 35 दैट इज इक्वल टू 935 cm। ओके, इस तरह में लिखना है। ओके, सिमिलरली 4 किलोमीटर 85 मीटर इक्वल टू कन्वर्ट इनटू मीटर। व्हाट क्वेश्चन कम? कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर। सो हाउ टू राइट इट? 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1000 मीटर प्लस 85 मीटर दैट इज इक्वल टू 4000 मीटर प्लस 85 मीटर। You add to 4000 plus 85 that is equal to 4085, 4085 मीटर। हम इसी तरह किलोमीटर किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हमें छोटा ना करना है, suppose question given 4 2 3 5 6 meter equal to dash kilometer dash meter given. We know that kilometer to meter, how many places are there? Okay, I am writing this number. Okay, 1 kilometer, we know that 1 kilometer equal to 1000 meter, 1 kilometer equal to 1000 meter. So for that we are dividing 4 2 3 5 6 divided by 1000, divided by 1000. Okay, so 1000 kilometer will come, that is equal to, after 3 place 1 2 3 place count and put 42 kilometer 356 meter. Okay, 3 0 are there, 1 2 3 0 are there. So 1 2 3 place you put kilometer here. Okay, right, meter. Now we can say 9052 meter equal to dash kilometer dash meter. What to do? 9052 divided by 1000 that equal to 9 kilometer 052 meter. So 1 2 3, after 3 place 1 2 3, it will become 9 kilometer, it will become 052 meter. Okay, thank you for watching my video, and in next class we will discuss more. Thank you for watching.